Hey guys, good evening all of you. When I'm live, please let me know. Very good evening to one and all. Welcome to this second session of the revision, or you can say the fast track for the June and December exams. Very good evening. Good evening. Welcome to the MEPL channel. I welcome all of you to the MEPL channel. Very good evening, all of you. Just mark your presentee. Who all is there? Let me check. Who all is there for the session? Good evening, Kavya. Good evening, Rupa. Good evening. Good evening. I hope yesterday's session you have understood very well, and we have started with the topic of valuation. And today we are going to complete the valuation topic. आज valuation का topic complete हो जाएगा, तो your 10 marks will be secured. Very good evening, Chandni. Good evening, Bhargav. Good evening, all of you. Good evening. Good evening, Anusuya. चलो फटाफट लेट ऑल योर फ्रेंड्स नो, जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को बता दो कि वी हैव गॉन लाइव, वी हैव स्टार्टेड द सेशन. गुड इवनिंग अश्विनी. Yes guys, so we don't want to waste any time, so I'm quite sure that you have already liked the video, because you are sure we are going to have some power packed session. So you have already liked the video and you have subscribed to the channel and hit the bell icon. We at MEPL always believe in quality education at affordable prices. Quality education. Quality is very important. Yes. Soumyajit, very good evening. Sushma, good evening. Chalo guys, let's start. Let us start. As I can see, YouTube is sending notification and one by one you all are joining. And like yesterday, do you promise me to sit till the end? To sit till 10:30? Yes or no? Rather, today's session is like this: 10:30 or topic of valuation, whichever is what? Whichever is later, isn't it? We all are tax student. We all like the clauses to be understood. So, till the time your valuation topic gets over, do you promise me to sit? Give me that promise, guys. Give me that promise. Okay. So, let's start. Let us start. From rules, we have to start. 27. What is 27? 27. When to go to rules? When we have to go to rules? We have to go to rules when assessable value cannot be taken as transaction value. When AV cannot be taken as TV, you have to go to rules. Okay. Yes. Now, what is rule 27 saying? Yesterday, we have seen that, check. Rule 27 is saying that when price is not sole consideration, जब जो price decide हुई है, that is not the only consideration, then how to determine the value. Okay, so when price is not sole consideration, not the only consideration, then how to decide the value. Okay, that is what is 27 talking about. So what 27 says? It says that in such case, assessable value will be open market value. Sir, what exactly are we discussing? Check. What exactly are we discussing? One simple example I will give you, and then link all the clauses of this rule with that example. There is a dealer of mobile phones. There is a dealer of mobile phones. And the dealer of mobile phones is selling you iPhone. What he's selling you, guys? He's selling you iPhone. Okay, and what you do now is you give your old iPhone, and in exchange you get new iPhone, you get brand new iPhone. Got the point? Now guys
The new iPhone this dealer is selling to others, to other buyers. One second. To other buyers, this iPhone is being sold. One second. Some disturbance in this. Okay, we'll come back to that. We will come back to this particular slide, no problem. Now, did you get the point? That iPhone you are getting for 70,000. So you are paying 70,000, but you are not paying only 70,000. You are also giving your old iPhone. So guys, for the shopkeeper, tell me, is price the only consideration? Price is not the only consideration for shopkeeper. Shopkeeper is getting two things. What are the two things shopkeeper getting? One is the price amount of rupees, how much? 70,000. And second is old iPhone. Isn't it? So price is not the sole consideration. यहाँ तक समझ में आया कि price is not sole means only consideration for the shopkeeper? Yes or no? If price is not only consideration, suppose price मिली है shopkeeper को 70,000 प्लस ओल्ड आईफोन भी मिला है, तो 70,000 पे जीएसटी नहीं आ सकता. जीएसटी हैज टू बी ऑन. यस, सम डिफरेंट वैल्यू, वो वैल्यू निकालेंगे एज पर रूल 27. दैट वैल्यू विल बी कंप्यूटेड एज पर रूल 27. So what that value will be? That value will be open market value. Open market value means at what price he is selling such iPhone to others. वो ये जो iPhone है वो दूसरों को कितने को बेच रहा है? At what price is selling such iPhone to others? Did you get my point? क्या आपको बात समझ में आ गई? Yes or no? Yes or no? Let me know quickly, guys. Did you understand the thing? So suppose to the others, such iPhone is sold for 1 lakh rupees. So this 1 lakh rupees is called as open market value. This 1 lakh rupees is called as open market value. Who are these others? These others are unrelated persons. How is 1 lakh? 1 lakh is exclusive of GST. So guys, this 1 lakh, which is sole consideration when the supplies to unrelated persons, is called as open market value. And you have taken new iPhone for 70,000. Now tell me guys, what is the accessible value in your case of new iPhone? Accessible value in your case of new iPhone is not 70,000, but it is 1 lakh. It is open market value. Did you get the point? Fatafat guys, let me know in the chat window, did you understand the point? That what exactly is 27 trying to say? Rule 27, what it is trying to say? Did you get the concept of open market value? Open market value means what? Open market value means that value where price is sole consideration, where price is sole consideration and supplier and recipient of supply are not related with each other. Is the point clear guys? Yes. Very good, wonderful. Let's go ahead. So here accessible value will be 1 lakh and not 70,000. This is simply
what this clause is saying. But ऐसा भी हो सकता है, it can happen like this also, that open market value is not available. Okay, below G, it's not about selling below market value, it is about price not being sole consideration. We are going to open market value because price was not the sole consideration. That is the point. Acha, if open market value is not available, then what to do? Then take the total of money received, sum total of consideration in money, and what is the value of that which is given in non-monetary terms, that you take total of those two things. आप उन दोनों की टोटल ले लो. Got the point? Then if value of supply is not determinable under clause A or clause B, तो clause A clause B दोनों से value नहीं निकलती है, then what it will be? Then it will be supply, value of supply of goods of like kind and quality. And friends, this sequence matters. First you have to try taking open market value. अगर open market value available नहीं है, if open market value is not available, then go for that total of money plus value of that something which is not in money. Then go for that. If that is also not available, then go for value of supply of goods of like kind and quality. And finally, if that is also not possible, then you go to clause D. Clause D को हम बोलेंगे residuary. Residuary means आपको valuation करना होता है as per 30 and 31. Okay, in rule 30 you do valuation at 110% of cost of goods. जैसे आपको पता है in rule 30 आप valuation करते हो at 110% of cost of goods, and 31 में आप valuation करते हो applying general provisions of valuation. Okay, so ऐसे होता है valuation इस केस में. आपके पास बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स आने वाले हैं. यू आर गोइंग टू गेट वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स ऑन दिस विच आर ऑल्सो एग्जाम क्वेश्चंस, एंड उससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा. सो गो टू द क्वेश्चन which are given at the end, which are questions based on valuation rules. Are you with me, all of you? चलो देखो, चेक रूल 27 के बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन. मिस्टर एक्स परचेसेस एप्पल आईफोन, ओपन मार्केट वैल्यू 80,000. ओपन मार्केट वैल्यू इज 80,000 guys from registered mobile dealer in exchange of his existing mobile phone. Registered mobile dealer agreed to accept 72,000 instead of 75,000 as he would be still in profitable position. Okay, the old mobile phone can be sold for 10,000. Yes guys, tell me what is the GST implication on this transaction. मुझे इतना बताओ कि यहाँ पे accessible value क्या होनी चाहिए. आई होप आपको सवाल समझ में आया है. एक शॉपकीपर है, आप शॉपकीपर के शूज में जाके सोचो. यू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ शॉपकीपर. शॉपकीपर इज सेलिंग द मोबाइल फोन फॉर 72,000. ओके, बट 72,000 is not sole consideration. Apart from 72,000, he is also getting one old mobile phone. तो एक पता है कि 72,000 is not sole consideration. So guys, if 72,000 is not sole consideration, that's why you are going to rule 27. Because of that, your accessible value will be the open market value as per clause A. तो यहाँ पे open market value क्या है?
80,000। तो आपका आंसर क्या है? 80,000। वेरी गुड भूमा जी एंड चांदनी जी, वेल आंसर, गुड आंसर। फाइनल आंसर इज 80,000। बस इतना सिंपल है। यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस मैंने देके रखे, चेक चेक गाइस, I have given you the solutions here. As per rule 27, where the price is not sole consideration, क्या हुआ है? Price is not sole consideration for supply. Open market value would be the value of supply. इसलिए वैल्यू हो जाएगी 80,000. That's why value would be 80,000. Guys, is it clear to all of you? Yes or no? And further, एक एडिशनल पॉइंट पढ़ लो यहाँ पे. As per notification 10/17, CG has exempted supplies of second-hand goods received by registered persons dealing in buying and selling of second-hand goods and who's paid tax on value of outward supply of such second-hand goods as determined. मतलब ना, ये जो सेकंड हैंड गुड्स वो परचेस कर रहा है ना, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं आएगा रिवर्स चार्ज बेसिस पे. बस इतना ही काम है. बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डिटरमाइनिंग द एसेसेबल वैल्यू. वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, चलो गाइस, लेट्स गो टू सेकंड क्वेश्चन. ऑल सेट फॉर द सेकंड क्वेश्चन? यस और नो? चलो देख लो. अनिशा जी गुड आंसर. राहुल, खुशी, रुचा, well done guys, well done, very good answer. Even Kavya also gave the answer. Chalo guys, keep the same momentum. Second, S supplied goods X to R for consideration of 5 lakhs. Okay, 5 lakh के goods बेचे. Mr. R also gave some material to S as consideration. तो क्या समझ में आता है? प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन. क्यों समझ में आया प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन? बिकॉज आर ऑल्सो गेव सम मटेरियल टू एस, isn't it, as consideration. So price is not sole consideration. Okay, whose value was 20,000. Mr. S has supplied same goods. बहुत important sentence है. S has supplied same goods to another person at a price of 5,71,200 including GST of 12%. So can you tell me guys, what will be the assessable value? तो कैसा है 571,200? 571,200 is including GST of 12%. So can 571,200 be directly called as open market value? क्या 5,71,200 को हम open market value बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते. And both students tempt होंगे to add 20,000 in 5 lakh and take 5,20,000 as value. But guys, 5,20,000 ये वैल्यू नहीं आएगी डायरेक्टली. आपको क्लॉजेस फॉलो करने होते हैं. यस और नो? यू हैव टू फॉलो द क्लॉजेस. पहला क्लॉज क्या होता है? ओपन मार्केट वैल्यू. पहला क्लॉज क्या होता है? ओपन मार्केट वैल्यू. तो ओपन मार्केट वैल्यू पॉसिबल है ना यहाँ पे? यस, ओपन मार्केट वैल्यू पॉसिबल है. तो 571,200 is 112 actually. So 100 is how much? तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए. आपको आंसर मिल जाएगा 5,10,000. चेक. आंसर इज 5,10,000. इफ यू हैव गॉट 5,10,000, वंडरफुल गाइस. तो यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना था ये भी मैं साइमल्टेनियसली बताता हूँ, ऑब्वियसली, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कि आपको सिर्फ ऐसा हवा में आंसर आने से फायदा नहीं है. स्टेप वाइज प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट गाइस. यू एग्री विथ मी? तो प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए? दैट
वी आर गोइंग टू रूल 27, हम जा रहे हैं रूल 27 की तरफ. इन दैट इट विल बी ओपन मार्केट वैल्यू, वो नहीं है तो सेकंड क्लॉज दिया है, वो नहीं है तो थर्ड क्लॉज दिया है. एंड देन ओपन मार्केट वैल्यू का मीनिंग समझाया है. ओके, खुद के लैंग्वेज में लिखा तो भी चलेगा, इट्स ओके इवन इफ यू राइट इन योर ओन लैंग्वेज, कोई स्ट्रेस नहीं है. यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज, करेक्ट ना अनिशा जी? यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज. ओपन मार्केट वैल्यू विल बी full value in money excluding GST, where supplier and recipient of supply are not related. Price is sole consideration to obtain such supply at the same time when the supply being valued is made. तो यहां पे आंसर आएगा 5,10,000. क्लियर है सबके लिए? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस. एंड अभी आगे देखो, आगे देखो, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है सवाल. व्हाट वुड योर आंसर बी इफ 571,200 इज नॉट अवेलेबल? एक पूछा आपको, इफ 571,200 नहीं है आपके पास, तो व्हाट विल बी योर आंसर? नॉट अवेलेबल एट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. व्हाट वुड योर आंसर बी इन द अबव केस if open market value is also not available? Open market value of supply is not available. अच्छा, पहले तो ये पूछा, यहां तक देख लो. What would be answer if is 571,200 is not available at time of supply of goods to Mr. R? Then आपको क्या करना पड़ेगा? आपको B क्लॉज के पास जाना पड़ेगा. बी क्लॉज क्या बोलता है? वैल्यू ऑफ मीन्स वैल्यू ऑफ दैट थिंग विच इज इन काइंड, जो कि 20,000 है, एंड प्राइस जो कि 5 लाख है. तो यहां पे मैं देख सकता हूं राहुल, भूमा एंड चांदनी हैव गिवन परफेक्ट आंसर. आंसर वुड बी 5,20,000. क्यों 5,20,000? इफ ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, you have to check consideration in money, which is 5 lakh, and value of non-monetary consideration. Non-monetary मतलब जो काइंड में मिला है, उसकी वैल्यू है 20,000. तो फाइनल आंसर विल बी 5,20,000. क्या समझ में आया यहां तक? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड टिल दिस पॉइंट गाइस? तो इस एक क्वेश्चन से बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, चलो स्टेप बाय स्टेप. आपको लगेगा स्लो चल रहा है, लेकिन आज के एंड तक, सेशन के एंड तक वैल्यूएशन टॉपिक खत्म. नॉट ओनली सेक्शन बट ऑल्सो ऑल रूल्स. यस, चलो गाइस. Yes, very good. What would your answer be in the above case if open market value of supply is also not available? Open market value available नहीं है, but at the time of supply of goods by Mr. S, identical goods have been supplied at 5,25,000. या identical goods have been supplied at 5,25,000 का मतलब है, ये है value of goods of like kind and like quality. Yes, so value of goods of like kind and quality के पास आपको जाना है. सपोज आपके पास ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है और आपके पास वो वैल्यू भी नहीं है. कौन सी? विच वैल्यू? 20,000 वाली वैल्यू भी नहीं है. तो आपको एज अ थर्ड प्रेफरेंस यू हैव टू गो टू सी क्लॉज. And according to C clause, your answer will be 5,25,000. Check. So if open market value is not available, further, हाँ हमने बहुत क्लैरिफाई किया है. देखो समझ में आता है कि नहीं? बहुत ही ज्यादा क्लैरिफाई किया है. Further, if value of goods given along with price is also not available, दोनों अवेलेबल नहीं है, तो आपको जाना है
मतलब 20,000 की भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो आपको जाना है वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, जो कि है 5,25,000। तो क्या सबको समझ में आ गया? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस रूल गाइस? तो आई विल गिव यू क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एज होमवर्क, एंड ऑब्वियसली आपके पास इसके सॉल्यूशंस ऑलरेडी है, you already have its solutions, so no need of taking tension. Just do third and fourth question all by yourself, and मैं तो हूँ डेली आपके सामने आने वाला हूँ, तो डाउट है तो भी पूछ लो। ग्रेट, चलो आगे बढ़ते। कैन वी गो टू रूल 28? कैन वी गो टू रूल 28? क्या है 28? व्हाट इज 28? 28 is when supply is between related persons, or when supply is between distinct persons. Yes or no? When supply is between related persons or when supply is between distinct persons, we talk about rule number 28. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि ये सप्लाई क्यों होता है। ये सप्लाई इसलिए होता है क्योंकि शेड्यूल 1 में क्या बोला है? शेड्यूल 1, वेयर इज शेड्यूल 1? सीजीएसटी एक्ट का शेड्यूल 1 सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, मतलब स्कोप ऑफ सप्लाई। स्कोप ऑफ सप्लाई में सम एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज सप्लाई इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन, करेक्ट और नॉट? तो वो कौन से एक्टिविटीज है? वो दिए गए हैं शेड्यूल 1 में। फ्री ऑफ कॉस्ट भी हुए नहीं एक्टिविटीज तो भी उसको सप्लाई माना जाता है। इवन इफ दिस एक्टिविटीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज कंसिडर्ड एज सप्लाई। यस, तो उसमें कौन सी एक्टिविटी दी गई है? सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्संस और सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस। सर डिस्टिंक्ट पर्संस मतलब क्या? डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब हेड ऑफिस, ब्रांच, ब्रांच 1, ब्रांच 2, एक ही एंटिटी के डिफरेंट यूनिट्स, एक ही एंटिटी के डिफरेंट यूनिट्स, उनका पैन सेम है बट उनके जीएसटी नंबर्स अलग है। दे हैव सेम पैन बट डिफरेंट जीएसटी नंबर्स, दे आर कॉल्ड एज डिस्टिंक्ट पर्संस। यस सर, ये कहां पे दिया गया है? ये सेक्शन 25 में दिया गया है। दिस इज गिवन इन सेक्शन 25, द मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट पर्संस। तो इज फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट पर्संस क्लियर? क्योंकि एक बहुत सिंपल सी चीज है, ब्रांच ट्रांसफर्स, ब्रांच ट्रांसफर्स भी आ जाएंगे, कवर हो जाएंगे इसमें, because branch transfers is also equal to supply. Of course, if those branches have different GST numbers, GST numbers are different of those branches, then उनके बीच में जो ट्रांसफर होता है वो भी सप्लाई माना जाता है, even that is called as supply. Is it clear guys? Yes or no? So now it is our responsibility to do valuation for that. How will be the valuation done? Check. The value of supply of goods or services between distinct persons as specified in 25, or where supply and recipient are related other than of course through agent, क्या होगा valuation? It will be open market value. फिर से आ गया देखो, once again it is open market value. Got the point guys? It is open market value of such supply. If open market value is not available, then it will be what? Then it will be value of supply of goods or services of like kind and quality. First preference,
open market value. If that is not available, value of supply of goods of like, kind and quality. If that is also not available, then go to residuary. Correct? Go to residuary, then that is 30 and 31. But एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है. Here one wonderful option is given. What is that option? To take 90% of price charged as value if goods are intended for further supply as such by recipient. समझाता हूं आपको, 1 मिनट में समझाता हूं. ये देखो, लुक हियर, ए एंड बी में डीलिंग हो रहा है. ए एंड बी में डीलिंग हो रहा है. बोथ आर रिलेटेड. ए एंड बी आर डीलिंग. बोथ आर रिलेटेड. What is the AV? Neglect. What is the AV? Neglect. So आपको accessible value कैसे निकालनी पड़ेगी? Going to rule number 28. 28 क्या बोलता है? Take accessible value as open market value. वो भी अवेलेबल नहीं है तो good, like, kind and quality. Correct? Price of goods of like, kind and क्वालिटी वो भी अवेलेबल नहीं है तो 30 31. गॉट इट? क्लियर यहां तक? अब समझ लो ऑप्शन में क्या बोला है. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्कस्ड इन ऑप्शन. पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बोलो हु टू आर रिलेटेड इन दिस केस. कौन दो पर्सन्स इस केस में रिलेटेड है? मेरे एग्जाम्पल में who two are related? A and B are related. Yes, A and B are related. Now suppose वो जो गुड्स है ना जो B ने खरीदे हैं, वो B ने खरीदने के बाद आफ्टर B परचेसिंग इट, मोबानी, after B purchasing it, B has sold to C. Anisha ji, B has sold these goods to C. C is not related to B. अब ऑप्शन क्या है? A के पास ऑप्शन क्या है? A के पास A को वैल्यू निकालना है ना गुड्स का, विच आर बीइंग सप्लाइड टू B, इसका वैल्यू निकालना है ना. तो ऑप्शन क्या है? जो प्राइस at what price has B sold to C वो ऑब्जर्व करना है और उस प्राइस का 90% लेना है. 90% guys is fixed. Okay, so they may take 9,000 as the value. When goods are being sold by or sent by A to B, value may be taken as 90% of that price at which such goods are sold by B to C. क्या सबको समझ में आया ये? Did you all understand what I am trying to tell you? Yes or no? फटाफट चैट विंडो में बोल दो. फटाफट. फटाफट means super fast. You have to tell me in the chat window that did you understand this point? Yes sir. Very good, very good. Now what about others? Awesome, thank you. Okay guys, what about others? And you don't have to fall in anything. Now what are they saying? See this. What are they saying? See this. Value declared in the invoice itself may be taken as the value. What is this now? Where recipient is eligible for full ITC. Who is recipient? Who is recipient? B. When B is eligible for full ITC,
Then what is the value declared in the invoice? What is the value declared in the invoice when A is selling goods to B? That value itself will be open market value, means that value itself will be accessible value. मतलब देखो, फिर से देखो, और एक डायग्राम बनाए आपके लिए. One more diagram is made for you. A has sold goods to B. Both are related to each other. Check. Focus on this diagram. I will tell you. A has sold goods to B. A has sold goods to B. Both are related to each other. This story you know. Now guys, B is also registered in GST. B is also registered in GST. So B is eligible to claim ITC. B is eligible to claim ITC. Got the point? B is eligible to claim ITC. Did you understand? So government says there is no headache. Why are we fighting? What are we fighting for? Whatever value A has charged to B, that itself we can accept as accessible value. Why guys? Why? Reason is very simple. Suppose 1 lakh rupees has been charged. Suppose guys 1 lakh rupees has been charged, then and GST is 18%. So 18,000 will be GST. So 1 lakh 18,000 will be the selling price. Do you agree? So for this A, output tax will be 18,000. For B, ITC will be 18,000. Do you agree with me? That if B is eligible to claim ITC, then B can claim ITC of 18,000? Yes or no? माना कि दोनों रिलेटेड है, agreed, both are related, but if A is charging to B 1 lakh plus 18,000 of GST, then B can claim ITC, na? Then B can claim ITC of 18,000. Then government says, what are we fighting on? Anyways, if instead of 120 they are declaring it 1 lakh, no problem, because anyways this whole transaction is neutral for revenue. मतलब इससे जीएसटी डिपार्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता. इससे जीएसटी डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट के जीएसटी कलेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनीवेज ये जो चार्ज करेगा अमाउंट ए, उसका बी आईटीसी ले लेगा, तो कुछ इश्यू ही नहीं है. वी शुड नॉट फाइट ऑन द वैल्यू इन सच केसेस. इसलिए क्या बोला है, व्हेन रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, then what is the value declared in the invoice? That value declared in the invoice itself shall be open market value. Means that itself shall be your what? Accessible value. Correct? So then don't fight on the open market value and all these things. Okay, anyways guys, this is a fast track batch. And it is expected कि आपने पहले पढ़ा है. वी आर रिवाइजिंग इट, इजंट इट? आप बीच बीच में मुझे याद दिलाना कि सर वी आर डूइंग रिवीजन. चलो गाइस, इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? Shall we see example on 28? नहीं तो एक काम करते, 29 भी देख लेते हैं एंड एग्जाम्पल देखते दोनों का साथ में.
वेरी गुड योगराज, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या खुशी, बेलूजी एंड चांदनी, तीन लोगों को ही समझा है, बाकी को नहीं समझा? या बाकी लोग क्या लिखने में व्यस्त है, या सोचने में व्यस्त है, या सिर्फ श्रवण भक्ति कर रहे हैं? श्रवण भक्ति मीन्स ओनली लिसनिंग। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग गाइस, better you put in the comment box, right? Better you put in the comment box. फाइनली हमें क्या चाहिए? हमें आपका नाम यहाँ पे चाहिए। आप देख सकते हो हमारे एज अ टीम, एज अ फैमिली, स्टूडेंट्स की फैमिली, एमईपीएल फैमिली से कितने रैंकर्स आए हैं अभी तक, आप देख सकते हो। So many rankers we have got from MEPL, and we want your name here. We want your name here. Okay, name photo यहाँ पे चाहिए। तो ऑब्वियसली आपको लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं। If you are understanding the lectures, then obviously you should refer these lectures to your friends. Refer करने चाहिए कि नहीं? Or will you keep the benefit for yourself? No, you should refer. And if you have not taken admission for this batch, and if you want to take admission to this batch, बहुत सिंपल है, क्योंकि many students are asking how to take admission for this batch. तो क्या करना है आपको? You have to go to the MEPL website, go in the courses, select the course, go ahead and take the admission. Simple. उस कोर्स में ये कोर्स लिस्टेड है as a fast track batch, correct? Go ahead and take that, opt for that. चलो, क्योंकि मंडे से जो सेशंस होने वाले हैं, वट एवर सेशंस आर गोइंग टू टेक प्लेस फ्रॉम मंडे, दे विल बी ऑन द ऐप सेम टाइम, बट दे विल बी ऑन द ऐप एप्लीकेशन ऑफ MEPL, एंड ऑब्वियसली यू विल गेट इट्स रिकॉर्डिंग्स एज वेल। एंड आपको उस एप्लीकेशन पे इस सब नोट्स की लिंक भी मिल जाएगी। यू विल गेट अ लिंक टू ऑल दिस नोट्स इन द एप्लीकेशन। ओके, चलो गाइस आगे बढ़ते। रूल 29 पे जो भी टाइम डालना है ना, वो 27, 28, 29 में डालना है, बिकॉज 30 में तो कुछ है नहीं। 30 में क्या है? 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स इज द वैल्यू, गुड्स सर्विसेज। 31 में क्या है? 31 में है दैट वैल्यूएशन विल बी डन एज पर जनरल प्रिंसिपल्स। तो 30-31 में टाइम नहीं डालना है। अब 29 देख लेते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स आर बिटवीन प्रिंसिपल एंड इज एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में सप्लाई हुआ है, तो उस केस में वैल्यू क्या होगी? वैल्यू होगी ओपन मार्केट वैल्यू। ओके, अगर ओपन मार्केट वैल्यू का एक ऑप्शन दिया है, क्या ऑप्शन दिया है? 90% ऑफ प्राइस चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय रेसिपिएंट टू हिज कस्टमर। जो 90% वाला ऑप्शन रूल 28 में देखा था, वैसा ही ऑप्शन यहाँ पे भी है। ओके, और वो यदि नहीं होता तो डायरेक्टली यू हैव टू गो टू रेसिड्यूअल। डायरेक्टली यू हैव टू गो टू रेसिड्यूअल विच इज 30-31। क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया? यस यस यस। अब देखो, ये एग्जाम्पल देख लो, एक 29 का एग्जाम्पल देख लो। देयर इज वन प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल है जो एजेंट्स को गुड्स भेजता है। प्रिंसिपल इज सेंडिंग गुड्स टू एजेंट। दोज गुड्स आर ग्राउंड नट्स, दोज गुड्स आर ग्राउंड नट्स। अब आपको क्या करना है? हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, इज दिस ऑल्सो सप्लाई? तो यस, ये तो सप्लाई है। क्यों सप्लाई है? ये शेड्यूल में दिया गया है, शेड्यूल 1 में, कि सेंडिंग ऑफ गुड्स
बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट इज सप्लाई। तो ये तो सप्लाई है, तो इस सप्लाई का अश्विनी, इस सप्लाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ओपन मार्केट वैल्यू। सपोज there is one unrelated party from whom agent is purchasing such groundnuts. At what price agent is purchasing such groundnuts? 4550 per quintal. तो 4550 पर क्विंटल यही बन जाएगा ओपन मार्केट वैल्यू। इज इट क्लियर गाइज? यही बन जाएगा ओपन मार्केट वैल्यू। गॉट इट? एंड वो बन जाएगा एसेसेबल वैल्यू। क्लियर? बट गाइज सपोज ये फॉलो नहीं करना है तो एक ऑप्शन है आपके पास। क्या ऑप्शन है? क्या ऑप्शन है? एजेंट यही गुड्स अनरिलेटेड बायर्स को बेच रहा है। एजेंट इज सेलिंग सच गुड्स टू अनरिलेटेड बायर्स एट व्हाट प्राइस? एट से 5000 पर क्विंटल। तो आप ऑप्शनली क्या प्राइस ले सकते हो? आप ले सकते हो 90% ऑफ 5000 विच इज 4500। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। यस, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि यू शुड टेक ओपन मार्केट वैल्यू और यू शुड गो विद द ऑप्शन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, नो? गाइस फटाफट चैट विंडो में बोलो whether the point is clear to all of you. चलो, इफ इट इज क्लियर हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते टू एग्जाम्पल्स। ओके, यस, वेरी गुड। एंड एग्जाम्पल्स होने के बाद ऑब्वियसली डायरेक्टली जाएंगे रूल 32। विल डायरेक्टली गो टू रूल 32। व्हाई 32? बिकॉज आई टोल्ड यू 31 में कुछ सिखाने जैसा नहीं है, कुछ डिस्कस करने जैसा नहीं है। चलो, गो टू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वैल्यूएशन रूल्स। उसमें से हमने फर्स्ट एंड सेकंड तो कर लिया, थर्ड फोर्थ मैंने होमवर्क दे दिया आपको। यस गाइस, गो टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। यू हैव टू चेक सिक्स्थ क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ है कि सिक्स्थ है? सिक्स्थ है। सिक्स्थ का आंसर है। गो टू सिक्स्थ क्वेश्चन। मेसर्स सॉलिड फैब्रिकेटर्स, आप देख लो अभी ये क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन व्हाट, आप ही मुझे बोलो अभी। मेसर्स सॉलिड फैब्रिकेटर्स ओन्ड बाय कल्याण is popularly known for assembly of large machines. Messrs SS Fabricators also owned by Kalyan. मतलब Kalyan is a common owner for solid fabricators and SS fabricators. समझ में आ गया? इसके वजह से solid fabricators and SS fabricators दोनों बन जाते हैं related because there is a common ownership. They are engaged in fabrication of small machines. A factory contracts solid fabricators for fabrication of its machine for fee of 5 lakhs. Messrs Solid Fabricators subcontracts the work to Messrs SS Fabricators for 4 lakhs. Okay, अब देखो हाँ, SS Fabricators and Solid Fabricators के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने को है? 4 लाख रुपीज। बट 4 lakhs will be neglected because both are what? Both are related to each other. Okay,
and ensures supervision of the work performed by them. Generally, SS fabricator charges a fixed sum of, जनरली बोला है ना, मतलब यहां पे हमें मिल सकता है ओपन मार्केट वैल्यू. ओके, रूल नंबर 28 देख रहे हैं. क्यों 28? सप्लाई इज बिटवीन रिलेटेड पर्सन, इसलिए 28. SS fabricator charges a fixed sum of 1200 per man hour to its clients and it spends 400 hours on this project. मिल गया आपको, solution मिल गया. Solution is 1200 into 400. Yes, solution is 1200 into 400. तो क्या है आंसर आपका? What is your answer, guys? Answer is 4,80,000. देखो, डीप में समझना है तो डायग्राम देख लो, प्लीज डायग्राम देख लो. एक पार्टी थी एसएस फैब्रिकेटर्स. ओके, एक पार्टी है सॉलिड फैब्रिकेटर्स. दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है. क्यों रिलेटेड है? क्योंकि उनका कॉमन ओनर है. कौन है कॉमन ओनर? कॉमन ओनर इज कल्याण. वेरी गुड अनिशा जी, एंड वेरी गुड खुशी, हुमा, चांदनी, ममता, शिवानी. वेरी गुड. कॉमन ओनर है कल्याण. ओके, अब SS fabricators has given a supply to solid fabricators and चार्ज कितना किया? 4 लाख रुपए चार्ज किया. But that 4 lakh will be neglected. Why neglected? AV cannot be taken as TV because supply is between related persons. But ये जो SS fabricators है ना, when this SS fabricators supplies to other unrelated buyers, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ही बोल लो, तो it charges 1200 rupees. And for such work which is given for solid fabricators, 400 hours are required. तो ये सपोज काम अनरिलेटेड पार्टी के लिए किया होता, if this work would have been done for unrelated party, तो अमाउंट चार्ज हो जाती 4,80,000. So 4,80,000 is the final answer. Is it clear to all of you guys? Yes or no? समझ में आया सबको? चेक, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है मैंने. Since solid fabricators and SS fabricators are controlled by Kalyan, the two businesses will be treated as related. Therefore, 4 lakh will not be accepted as TV. Value of services shall be determined as per rule 28. Okay, which is taken when you are calculating value between related persons. Value of supply between related person. Accordingly, assessable value shall be open market value. So 1200 per man hour into 400 hours, 4,80,000. Clear? Yes or no? जरा चैट विंडो में बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं. मैं तो आपके फेसेस नहीं देख सकता ना, तो मुझे कैसे समझेगा? How will I understand that you have understood? तो उसके लिए आपको जरा चैट विंडो में थोड़े इमोजीज डालना पड़ेगा. चलो, मैं तो इतना अंतर्यामी नहीं हूं कि आपके फेसेस देख सकता हूं. चलो चलो आगे बढ़ते हैं. नो प्रॉब्लम गाइस. यहाँ पे एक बता दूं मैं आपको पॉइंट. चैट विंडो है ना, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. जीएसटी फ्री भी है. यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. चलो आगे बढ़ते हैं. तो आप अभी बाकी सम्स देख लो. ऑब्वियसली फास्ट ट्रैक है. मेन बैच में तो क्या
हर एक सम आपको सॉल्व करवाता हूँ नोटबुक में। फास्ट ट्रैक है तो थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। 10th क्वेश्चन देख लो, 10th क्वेश्चन देख लो, विच इज ऑन एजेंट। एजेंट का है 10th क्वेश्चन। मुझे क्या लग रहा है कि आप, यस, अब थोड़ा आप चैट विंडो में बोल रहे हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। थोड़ा लगना चाहिए ना, लाइव लाइव क्लास है तो क्या, थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ स्टूडेंट्स भी देख रहा है। नो, फाइनल के स्टूडेंट्स थोड़े एक्सप्रेसिव नहीं होते, बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं होते। चलो, होम अप्लायंसेस लिमिटेड फरीदाबाद, देखो आप ठीक से, होम अप्लायंसेस लिमिटेड फरीदाबाद हैज 15 agents located across the state of हरियाणा एक्सेप्ट फरीदाबाद। मतलब समझ में आ गया कि ये सवाल रूल 29 का होने वाला है, प्रिंसिपल एजेंट। द स्टॉक ऑफ वैक्यूम क्लीनर्स is dispatched on just-in-time basis from Home Appliances Limited to location of the agents based on receipt of orders from various dealers on fortnightly basis. Home Appliances Limited is also engaged in wholesale supply of vacuum cleaners in Faridabad. An agent places order for dispatch of 20 vacuum cleaners. अब इस 20 वैक्यूम क्लीनर्स का वैल्यू निकालना है ऑन 10/12/2020। होम अप्लायंसेस लिमिटेड sold 20 vacuum cleaners to retailer in Faridabad on 8/12/2020 for 1,30,000. Okay, the agent effects the sale of 20 units to a dealer who would effect the sale on MRP of 7,000 per unit. Got it? Did you understand, all of you? This is your question. अब ये कैसे होगा solve? How this will be solved? What is exactly the facts in the question? Understand? समझ लो क्या हुआ यहाँ पे, थोड़ा समझ लो। ये देखो, होम अप्लायंसेस लिमिटेड नाम का प्रिंसिपल है एंड उसके मल्टीपल एजेंट्स है। ओके, अब उसमें से एक एजेंट की स्टोरी यहाँ पे दी गई है। फॉर दैट एजेंट 20 वैक्यूम क्लीनर्स आर सेंट। कितने कितने वैक्यूम क्लीनर्स? 20। ओके, तो पहले तो ये सप्लाई होगा। सप्लाई क्यों होगा? एक्चुअली बेचे नहीं है, सिर्फ सेंड किए हैं, तो भी सप्लाई होगा। सप्लाई क्यों होगा? ऑलरेडी आई टोल्ड यू, शेड्यूल 1 में आता है ये, तो सप्लाई तो होने वाला है। तो अब उस सप्लाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे वैल्यू? चेक चेक चेक, कैसे निकालेंगे? ये जो प्रिंसिपल है ना, उसने सेम डे पे या नियरेस्ट टाइम पे अनरिलेटेड बायर्स को ऐसे वैक्यूम क्लीनर्स बेचे हैं। कितने को बेचे हैं? यस, 1,30,000 को बेचे हैं। तो उसको बोलते हैं ओपन मार्केट वैल्यू। तो क्या हम ओपन मार्केट वैल्यू ले सकते हैं जैसे ग्राउंड नट्स की ली थी 4,550? यस, या फिर एक और ऑप्शन अवेलेबल है। व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल? व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल? At what price agents are selling to dealers, to third parties? 7,000 पर वैक्यूम क्लीनर, ऐसे 20 वैक्यूम क्लीनर्स बेचे हैं, तो उसका 90%, दैट इज 1,26,000। ऑप्शन इज विद द what? Option is with the home appliances. Rucha ji, did you understand? Shivani, very good. Khushi, very good, very good. योगराज, क्या बात समझ में आ गई सबको? यस,
वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे डिटेल में आंसर दिया है, तो आप देखो आंसर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सप्लाई क्यों है, ये मैंने यहाँ पे बोला है, व्हाई इट इज अ सप्लाई, आई हैव टोल्ड यू। देन आई हैव टोल्ड यू दैट यू विल हैव टू डू वैल्यूएशन एज पर रूल 29, and as per rule 29 it is open market value or 90% of the price charged by recipient of the intended supply to its customers, okay, at the option of the seller. So the value of the supply will be 1,30,000, which is open market value, or yes, 90% of 1,30,000 or 1,40,000, which is 126. जो भी है, we will leave it on the yes, Aman ji, you can give the answer. Who said no? You can. Great. Chalo, so this way we have completed till rule number 31. Bhargav ji, did you understand that in this way we have completed till rule number 31? Can I go to rule 32? With your permission, can I go to rule 32? What will happen if it doesn't get completed by 10:30? 10:30 तक कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या करोगे? What will we do if it doesn't get completed by 10:30? लेट मी सी क्या है आपका सोल्यूशन, क्या आपका 10:30 तक नहीं खत्म हुआ तो? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन सप्लाईज। अब आपको क्या करना है, देखो पहले तो इसमें कुछ सर्विसेज कवर्ड होते हैं, एक और समझ लो 31 ए भी देखना है, 31 ए भी देखना है, बिफोर गोइंग टू 32 31 ए भी देखना है। 31 ए को डायरेक्टली इस हिंट्स के फाइल में हैव पुट इन द फाइल फॉर हिंट्स, आई हैव पुट 31 ए। तो आप 31 ए भी देख लो प्लीज, है आएगा आगे आएगा अभी। चलो 32 देख लेते पहले। सी फॉरेन करेंसी, पहला है फॉरेन करेंसी वाला, ओके, फॉरेन करेंसी वाला है। अब क्या बोला गया है कि वी आर exchanging the foreign currency, in that case what will be the value? The bank or the what authorized dealer, bank or authorized dealer is giving this supply of exchange of foreign currency. So in this case what will be the assessable value? Okay, तो एक सिंपल लॉजिक बताता हूं आपको। आपको डिफरेंस निकालना है बिटवीन आरबीआई रेफरेंस रेट एंड सेलिंग स्लैश बाइंग रेट एज द केस मे बी, ओके। चलो तो एक काम करते हैं, विथ डायरेक्टली विथ एग्जाम्पल्स वी विल सी दिस, ओके। एग्जाम्पल के साथ ही इसको देखते हैं। दो केसेस है फॉरेन करेंसी में, दोनों को एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। तो आप आ जाओ यहां पे ऑन क्वेश्चंस ऑन रूल 32। ये टिपिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ दिस सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जाम। ये टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन है। देखो, मेसर्स मनी एक्सप्रेस लिमिटेड जयपुर
is an authorized money changer. Authorized money changer मतलब AD, authorized dealer, registered under FEMA. It enters into following transactions of money changing. It sold 10,000 US dollars at $1.71. Okay. He purchased 1000 euro at €1.70. Purchased 1000 GBP, 1 GBP 99. Sold 50,000 units of currency ABC. That 1 ABC is equal to 15. Now, Reserve Bank of India reference rates are given. Okay. And it has sold 9680 US dollars for 6,800 pounds. आपको क्या करना है? What you have to do? Calculate value of taxable supply of services and tax thereon if all charges are exclusive of GST. Applicable GST is at 18%. देखो, एक लॉजिक दिमाग में रखना है. You have to find out profit in each case. तो पहले केस में प्रॉफिट कितना हुआ है? We have sold at $1.71, but RBI reference rate for dollar is 70. तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 71 minus 70, ₹1 per US डॉलर. क्या ये समझ में आ गया पॉइंट? ₹1 पर US डॉलर प्रॉफिट हुआ है. Yes or no? So that profit multiplied by कितने डॉलर्स है? $10,000. तो ये हो जाएगी एसेसेबल वैल्यू. चेक, देख लो यहां पे 71 minus 70 into 10,000. क्लियर ऑल ऑफ यू? सेकेंड केस में प्रॉफिट कितना हुआ है? परचेस 1000 euros at €1.70, बट वो रेट था 71, बट आपने परचेस किया 70 को, तो प्रॉफिट कितना है? अगेन कोइंसिडेंटली ₹1 पर यूरो. तो 1 into 1000. चेक. तो 1 into 1000. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला तो आप बना सकते हो. आरबीआई रेफरेंस रेट माइनस बाइंग रेट. पहले केस में क्या हुआ? सेलिंग रेट माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट. डिड यू अंडरस्टैंड? अब देखो थर्ड में परचेस्ड 1000 GBP at 1 GBP is 99. 1 GBP is 99. But actually RBI reference rate was 100. तो अगेन प्रॉफिट हुआ ₹1 का. So 1 into 1000. Check 1000. Clear? All of you are getting it? And I hope कैल्सी के साथ बैठे हो. Sold 50,000 units of currency ABC. अब देखो मजे वाला पॉइंट है. ABC करेंसी का रेफरेंस रेट ही नहीं है. There is no reference rate of ABC करेंसी. ऐसे केसेस में क्या करना है? कैलकुलेट इंडियन रुपीज में कितना वैल्यू है टोटल. 50,000 इंटू 15 एक्सचेंज वैल्यू है. उस एक्सचेंज वैल्यू का 1% लेना है. रूल सेज टेक 1% ऑफ दैट. तो वो हो जाएगा. चेक 50,000 यूनिट्स इंटू 15, उसका लेना है 1%. तो 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, तो वो बन जाएगा 7,500. गाइस, इज दिस पॉइंट क्लियर? That when RBI reference rate is not available, if RBI reference rate is not available, तो आपको क्या करना है? तो आपको लेना है 1% of gross amount of currency exchanged. Is it clear? And
अब और एक मजेदार पॉइंट है और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 9680 यूएस डॉलर्स को बेचा फॉर 6800 जीबीपी। अमन 9680 यूएस डॉलर्स को बेचा फॉर 6800 जीबीपी। नन ऑफ द करेंसीज रुपीज, रुपीज इन्वॉल्व ही नहीं है। अब क्या करना है, दोनों को रुपीज में कन्वर्ट करना है, दोनों को रुपीज में कन्वर्ट करना है यूजिंग आरबीआई रेफरेंस रेट। मतलब क्या करोगे, 9680 इंटू 70 एंड 6800 इंटू 100। ये जो आपके वैल्यूज आएंगे ना, ये देखो 9680 इंटू 70, 6800 इंटू 100, ये जो वैल्यूज आएंगे कैलसी पे निकाल लो। उन दोनों में से विच एवर इज लेस उसका 1% लेना है। तो ये कब अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है व्हेन नन ऑफ द करेंसी, when none of the currency exchanged is rupees. Did you understand the point? क्या सबको ये पॉइंट समझ में आया? तो इस केस में 6,77,600 इज लेस, तो उसका 1%, एंड बाय दैट वे यू टेक टोटल, यू विल गेट टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, एंड उसके बाद उसका आप 1% ले लो, आपको मिल जाएगा, यस सॉरी, उसका आप 18% ले लो, आपको मिल जाएगा जीएसटी पेएबल। इज इट क्लियर? यस, वेरी गुड अनिशा, वेरी गुड अमन, वेल डन खुशी। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? यस, नो? Once I get clearance from you, we will go to next concept. Next concept, which will be reflected by another sum. Sum के बिना कुछ नहीं होता है। Tax में nothing can happen without sums. Next, there is an alternative way, guys. There is an alternative way. Okay. See what had happened, you know, I'll tell you one thing. Last to last term, I was taking such batch. Okay. Such revision batch, marathon, whatever, fast track batch. I was taking such batch. And one student, you know, he sacrificed his IPL match, means watching IPL match, etc., etc. He watched this particular session in depth, and question was asked of 8 marks. 8 marks question was asked of this concept in the exam, and he cleared the exam. And he came dancing to me with sweets. That sir, I cleared the exam and exactly this question was asked. And I had done only revision batch. So that is how effective these batches are if you follow them. Okay, chalo. Only thing is, don't lose patience. Don't lose patience. I will never lose it. You also never lose it. Okay. See, MNO Limited Delhi is authorized money changer registered under FEMA. It has entered the following transactions on supply of money changing. So now what we are discussing is alternative method. So if this particular authorized dealer wants, he may opt for this alternative method. May opt means if they tell you that this person is opting for 32(2)(b, then only you should do valuation according to this method. See what are they saying in given question? Compute value of taxable supply and GST payable where this person has opted for this option. Got the point? Why we are going for this? They are saying that this person has opted for this option. Okay, so let's do it. Let us do it, guys. What you have to do in this option, you have to apply some slabs.
Again, tell me in the chat window what you have to apply in this option. Some slabs you have to apply. Okay. What are those slabs? Try to understand. What are those slabs? Try to understand. Okay. So I'll tell you those slabs now. With the sum only, I'll tell you slabs, then we will recollect. See, there is a transaction that is taking place of 600 transactions of conversion of dollars into rupees of 20,000 per transaction. So please highlight 20,000. Please highlight 20,000. So when this transaction amount is not exceeding 1 lakh, when this transaction amount is not exceeding 1 lakh, you have to take 1% of this. Take 1% of this. So 1% of 20,000 or 250 rupees per transaction, whichever is higher. क्या करना है? What you have to do? Whichever is higher. So what is high in this case? Of course, higher is 250 per transaction. And how many such transactions? How many such transactions? 600 such transactions are taking place. So please do 600 into 250. You will get 1,50,000. Is it clear till this point? Yes or no? So let me explain you slabs. How are the slabs under rule 32 to B? Okay, when the foreign currency exchanged is up to rupees 1 lakh. When foreign currency exchanged is up to rupees 1 lakh in a transaction, then how much you have to take? You have to take 1% of currency exchanged. 1% of currency exchanged or rupees 250, whichever is of course higher. Did you understand this first slab with the help of example properly? Now see, 500 transactions of conversion of dollars into rupees of 1 lakh per transaction. So no problem, still 1 lakh per transaction. So you know you have to take 1 lakh into 1% or 250, whichever is higher. So of course you will get 1,000. Check 1 lakh into 1%, 1,000 or 250, whichever is higher. So of course you are going for 1,000. And how many such transactions? How many such transactions, guys? 500 such transactions. So 1,000 into 500. Check. You will get 5 lakh. Did you get 5 lakh? Then next 200 transactions of conversion of INR in dollar, 5 lakh per transaction. 5 lakh per transaction. Now how will you do for 5 lakhs? Check. What you have to do is for first 1 lakh, obviously for first 1 lakh it is 1,000 because 1 lakh into 1%. For whatever falls between 1 lakh to 10 lakh, whatever falls between 1 lakh to 10 lakh, it is at 0.5%. You have to take value at 0.5%. So here, what falls between, so total is 5 lakh. From 5 lakh, for first 1 lakh, you have done. For next 4 lakh, for first 1 lakh, it is 1%, 1,000. Next 4 lakh, it is 0.5%. So what is 0.5% of 4 lakhs? Yes, yes, friends. Yes, guys.
What is 0.5% of 4 lakhs? क्या है? It is of course 2000. Correct? And this 1000. So total is 3000. So did you get 3000? Check. And such how many transactions? Such 200 transactions. So 3000 into 200. क्या सबको आ गया 6 lakh rupees? Yes or no? Keep up the josh, guys. Keep up the josh. Then next. What is next? So in short, what is next slab, guys? Next slab is like this. When it is between 1 lakh, when it is between 1 lakh to, or you can say up to 10 lakhs. So what are you doing when it is up to 10 lakhs? 1 lakh to 10 lakhs. What you're doing? You are taking first 1000 rupees plus you are taking 0.5% of amount exceeding what? Of amount exceeding 1 lakh. Isn't it? And guys, now the last, this first 1000 you understood is for 1 lakh, and balance which exceeds 1 lakh, it's at 0.5%. Now comes the last slab. Let's try to understand. 100 transactions of conversion of euros in rupees, 500 lakhs per transaction. So please highlight 500 lakhs means 5 crores. तो आप क्या करोगे? What will you do now? When it is exceeding 10 lakhs, on amount exceeding 10 lakhs, you have to take at 0.1%. So guys, here what you have to do is, you have got 5 crores. What will you do? First 1 lakh, you know, will be 1000. Next 9 lakhs, you know, it will be 4500. So next 490 lakhs. I hope all of you understood it. This is 1% of 1 lakh. This is 0.5% of 9 lakh. And here 0.1% of 490 lakhs. So what is 0.1% of 490 lakhs? 49,000. So take total. Total will be 54,500. Do you agree? Do you agree? So in short, what is the third slab? When it is between, it is above 10 lakhs. When it is above 10 lakhs, what you are supposed to do? You are supposed to actually take 5,500 for the first 10 lakhs plus 0.1% of amount exceeding rupees 10 lakhs. Got the point? But come what may, this should not exceed 60k. It should not exceed how much? Rupees 60,000. It should not exceed rupees 60,000. Clear with all of you? So check. For 500 lakhs, it is how much? 54,500 as discussed. वो है 54,500 and 100 such transactions. So into 100, 54 lakh 50,000. Is it clear till this point, guys? Yes or no? Yes or no? Are you still having energy to continue? Lastly क्या हुआ है?
100 lakhs मतलब 1 CR का ट्रांजैक्शन है, तो आप डायरेक्टली कर दो दोस्तों। 1 CR का ट्रांजैक्शन है, पहले 10 लाख पे 5500 आएगा एंड नेक्स्ट 90 lakhs पे आएगा। वेरी गुड अमन जी। नेक्स्ट 90 lakhs पे आएगा एट 0.1%। तो वो नेक्स्ट 90 lakhs पे कितना आएगा? 9000 आएगा। तो टोटल कितना आएगा? 14400 आएगा। पहले बोला था आपको कैलसी लेके बैठो, कैलसी लेके बैठे हो ना? यस, तो 14500 आएगा इनटू सच 300 ट्रांजैक्शंस। दैट्स इट। 300 इंटू 14500 क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर होगा 43,50,000। सो गाइस, इसकी जब टोटल लोगे कैलसी पे नीटली, तो वो आएगी 1,10,50,000 एंड इसके ऊपर जीएसटी निकलेगा 19,89,000। इज इट क्लियर? सब प्लीज दोस्तों को बोलना कि दिस इज ट्रेजर ऑफ नॉलेज। आपको क्या चाहिए? आपको लास्ट कुछ डेज में और क्या चाहिए? ऐसे 40 घंटे पढ़ा तो ऑब्वियसली पास तो होने वाले हो आप। पास क्या, अच्छे मार्क्स लाने वाले हो। तो प्लीज बता दो आप सबको। ओके, चलो गाइस आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। आपको एक इजी रूल बताता हूं। आई टेल यू वन इजी रूल। एयर ट्रैवल एजेंट्स, तो आई थिंक फॉरेन एक्सचेंज वाला सबको क्लियर हो गया। यस, इज फॉरेन एक्सचेंज पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड आपके पास सॉल्यूशंस तो है ही। यस, तो दो पॉसिबिलिटीज है फॉरेन एक्सचेंज में, नॉर्मल और ऑप्शनल। ऑप्शनल में स्लैब्स अप्लाई करना है, नॉर्मल में लॉजिक बताया आपको। क्या लॉजिक बताया? सेलिंग रेट, बाइंग रेट जो भी है माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट, प्रॉफिट, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट। ऐसा वर्ड मत लिखो एग्जाम में, बट लॉजिक इज प्रॉफिट। यस, वेरी गुड। मैं सपोज बोलना चाहूंगा यहाँ पे, कहाँ पे? फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। दो पॉसिबिलिटीज है ना, रूल 32(2)(a एंड 32(2)(b। समझ में है ना? 32(2)(b इज optional in which you have to apply slabs. 32(2)(a), what you have to do? 32(2)(a) possibilities are, what are the possibilities? RBI reference rate is available. RBI reference rate is not available. And third possibility क्या है? Third possibility क्या है? Third possibility is that rupees not involved. समझ में आया कि नहीं? रुपीज नॉट इन्वॉल्व, ये है एक्सप्रेस एनालिसिस। ये ना ही प्लान है, कुछ एक्सप्रेस एनालिसिस है आपके लिए। आपको देख के एनर्जी आती है, आपको देख के श्योरली एनर्जी आती है। देखो, आरबीआई रेफरेंस रेट है तो प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालना है समझ में आया? आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं है तो क्या करना है? 1% ऑफ रुपीज इन्वॉल्व। एंड इफ रुपीज इन्वॉल्व नहीं है तो फाइंड आउट, कन्वर्ट, कन्वर्ट foreign currencies in rupees and take 1% of lower of them. Did you understand guys? Did you understand? फॉरेन एक्सचेंज सर्विस में क्या होता है? अब तो पक्का सा ठीक से समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स, आगे बढ़ता हूँ। यू आर स्मार्ट इनफ, आप
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप ये बाद में वीडियो देख के नाइसली आपके नोटबुक में लिख सकते हो। जो भी करना है वो करो, यू आर स्मार्ट इनफ। अब एयर ट्रैवल एजेंट्स जो है उनके वो वैल्यूएशन कैसे करते हैं उनके कमीशन का। ओके, तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या करना है, एयर ट्रैवल एजेंट ने सपोज इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग्स की है तो उसमें कमीशन ज्यादा एज्यूम किया जाएगा। तो इसमें कमीशन एज्यूम किया जाता है 10%। कितना? 10% ऑफ बेसिक फेयर। एंड डोमेस्टिक फ्लाइट्स है तो उसमें एज्यूम किया जाता है 5% ऑफ बेसिक फेयर। क्या ये पॉइंट समझ में आया सबको? 10% ऑफ बेसिक फेयर, 5% ऑफ बेसिक फेयर, बस इतना ही पॉइंट है एक्चुअली। अब देखो, मेसर्स एयरलाइन एसोसिएट्स हैज सोल्ड टिकट्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स टू सिंगापुर एंड फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग मंथ ऑफ जैन 2020। Amount charged is 30 lakhs on the flight, of which 10 lakh is towards passenger taxes. Of which 10 lakh is towards passenger taxes. तो क्या होगा यहाँ पे accessible value? Obviously 20 लाख पे ही आएगा। क्यों आएगा 20 लाख पे ही? Because 10 lakh is towards passenger taxes. So basic fare is 30 minus 10. तो 20 लाख पे आएगा 10%. So final answer will be 2 lakh rupees. Agreed? देख लो देख लो, फाइनल आंसर इज 2 लाख रुपीज। क्लियर? अमन जी क्लियर? रुचा क्लियर? मंथन, सॉरी ममता, वरुण, चांदनी, बिल्लू जी, सहा, अश्विनी, यस। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। कमल एसोसिएट्स सोल्ड टिकट्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर फ्रॉम वेरियस डोमेस्टिक फ्लाइट्स। तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स में क्या होता है? 5%। तो 90 लैक्स यहाँ पे अमाउंट कलेक्टेड है, बट जिसमें से 10 लाख रुपए अनिशा, इसके लिए टैक्सेस। तो 90 लैक्स माइनस 10 लैक्स, 80 लैक्स पे आएगा 5%। तो इज योर आंसर 4 लाख रुपीज? आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए 4 लाख रुपए। एंड जीएसटी निकालना है तो 4 लाख पे 18%, क्योंकि 4 लाख हो गई वैल्यू। देखो चेक चेक, 4 लाख तो हो गई वैल्यू, उस वैल्यू के ऊपर 18% होगा जीएसटी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ऑब्वियसली यहां पे क्या होगा, एयर ट्रैवल एजेंट, एयर ट्रैवल एजेंट। बस दो ही पॉसिबिलिटीज है। क्या है दो पॉसिबिलिटीज? यस, इट इज इंटरनेशनल बुकिंग्स एंड इट इज डोमेस्टिक बुकिंग्स। दो इंटरनेशनल बुकिंग्स में कितना लेना है? 10%। डोमेस्टिक बुक में कमीशन कम है, मार्जिन कम है, इसलिए 5%। दिस बोथ ऑफ व्हाट, जो भी है वो किसका लेना है? ऑफ, यस, बेसिक फेयर। आई होप गाइस इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ू मैं? कैन आई गो अहेड टू वन लास्ट प्रोविजन फॉर द डे? चलो एक लास्ट प्रोविजन आपको बताता हूं एंड देन वी विल स्टॉप। इफ यू आर रेडी देन ओनली
अदरवाइज आई विल टेक टुमारो। जैसा आप बोलते हो, आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बोलना यू वांट इट टू बी टुडे और वी शुड कंटिन्यू इट टुमारो। जैसा आप बोलोगे वैसे, क्योंकि पढ़ने वाले आप हो। ओके, पढ़ने वाले आप हो तो आप बोलना, मैं आप जो बोलोगे टुडे। वेरी गुड, ये जो स्पिरिट है ना, हैट्स ऑफ। चलो लास्ट थिंग करते हैं आज के लिए एंड देन वी विल स्टॉप। लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज जो है ना, उसमें होता है ऐसे, एक शॉर्ट में बताता हूँ लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज में क्या होता है। लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज में दो टाइप की पॉलिसीज बेचते हैं। ये जो कंपनीज है ना, दो टाइप्स की पॉलिसीज बेचते हैं। वन इज एंडोमेंट एंड वन इज टर्म। वन इज एंडोमेंट एंड वन इज टर्म। तो टर्म में होता है ना, टर्म पॉलिसी में जो होती है ना, टर्म, टर्म में सिर्फ और सिर्फ रिस्क कवर होता है। मतलब दिस टर्म इज अ प्योरली इंश्योरेंस प्रोडक्ट। टर्म इज अ प्योरली इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो इस टर्म जो है ना, टर्म, इस टर्म पॉलिसी में द रूल विच वी आर डिस्कसिंग, ये जो रूल डिस्कस कर रहे हैं ना, दिस रूल डज नॉट अप्लाई। ये अप्लाई नहीं होता है, ये अप्लाई ही नहीं होता है रूल। एंड 100% ऑफ द प्रीमियम, 100% ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू एसेसेबल वैल्यू। 100% ऑफ प्रीमियम हो जाता है एसेसेबल वैल्यू। कहाँ पे? टर्म में। बट एंडोमेंट में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन एंडोमेंट? एंडोमेंट में क्या होता है गाइस? एंडोमेंट में रिस्क कवर भी होता है, प्लस सेविंग्स भी होते हैं, प्लस सेविंग्स भी होते हैं। तो जो जीएसटी लगता है ना, वो सिर्फ इस पार्ट पे लगता है। द जीएसटी इज चार्ज ओनली ऑन द रिस्क कवर पार्ट। ओनली ऑन दिस पार्ट जीएसटी इज चार्ज। समझ में आया कि नहीं? ओनली ऑन द रिस्क कवर पार्ट जीएसटी इज चार्ज। इसके लिए यहां पे क्या बोला गया है, ये बाइफरकेट करके दिखा दो अभी। इसमें क्या बोला गया है, इसमें दो पार्ट्स हो सकते हैं। वन, वन पॉलिसी, मतलब कंपनी, पॉलिसी मेंशंस, पॉलिसी मेंशंस बाइफरकेशन। कौन सा बाइफरकेशन? विच बाइफरकेशन? हाउ मच इज टुवर्ड्स सेविंग्स एंड हाउ मच इज टुवर्ड्स रिस्क। तो ऑब्वियसली सेविंग्स के पार्ट पे जीएसटी नहीं आएगा, एंड ऑन द रिस्क पार्ट, दिस रिस्क पार्ट इज एसेसेबल वैल्यू, जिसके ऊपर जीएसटी आएगा। एज सिंपल एज दैट। बट मोस्टली कंपनीज आपको ये बाइफरकेशन नहीं देंगे। कंपनीज विल नॉट गिव यू दिस बाइफरकेशन। गॉट इट? तो पॉलिसी मेंशंस बाइफरकेशन, ये एक टाइप हो गया। सेकंड, पॉलिसी डज नॉट मेंशन, नो मेंशन ऑफ बाइफरकेशन, यही मोस्टली होगा, नो मेंशन ऑफ बाइफरकेशन। अब इसमें दो टाइप्स हो सकते हैं गाइस, इसमें दो टाइप्स हो सकते हैं। क्या दो टाइप्स हो सकते हैं? सपोज बाइफरकेशन मेंशन नहीं किया है, तो दो टाइप्स हो सकते हैं। उसमें सिंगल एन्युटी हो सकता है, मतलब एक ही टाइम आप प्रीमियम पे करके खत्म कर रहे हो इश्यू, दैट इज कॉल्ड एज सिंगल एन्युटी। एंड सिंगल एन्युटी एक है, सेकंड है नॉर्मल। अब जो सिंगल एन्युटी है, वहां पे 10% ऑफ
प्रीमियम 10% ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू एसेसेबल वैल्यू. 10% ऑफ प्रीमियम इज एसेसेबल वैल्यू. बाकी 90% उनको लगता है सेविंग्स में जाते हैं. तो गवर्नमेंट बोलती है 10% ऑफ प्रीमियम इज एसेसेबल वैल्यू. एंड नॉर्मल केस में बाकी दूसरे केसेस में क्या होता है? दूसरे केसेस में क्या होता है? दूसरे केसेस में जब फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे होता है तो 25% ऑफ दैट इज इक्वल टू एसेसेबल वैल्यू. एंड जो सब्सिक्वेंट ईयर्स का प्रीमियम होता है उसमें 12.5% ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू एसेसेबल वैल्यू. ओके, दिस इज हाउ वैल्यूएशन इज डन. आप ये बाद में भी लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो. चॉइसेस टोटली योर्स. और सब में भी आने वाला है, नोट्स में भी है, सब जगह पे है. सम देखते गाइस. एंड दिस इज वेरी लास्ट थिंग फॉर द डे. LIC ऑफ इंडिया, LIC का जीएसटी के लिए वैल्यूएशन करना है, इसलिए फिगर्स बड़े बड़े होने वाले. ठीक है, आप ये हिस्ट्री पढ़ सकते हो, जनवरी के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है. जनरल पॉलिसीज उन्होंने इश्यू की है, रोहित जी. जनरल पॉलिसीज उन्होंने इश्यू की है जिसमें टोटल प्रीमियम कलेक्टेड इज 12,000 lakhs. बट उसमें से फर्स्ट ईयर प्रीमियम इज 5,000 lakhs. इतना टोटल प्रीमियम 12,000 लाख. बट 12,000 में से दो बाइफर्केशंस है. फर्स्ट ईयर इज 5,000 lakhs, तो सब्सिक्वेंट विल बी 7,000 lakhs. ऐसे पॉलिसी होल्डर्स जिन्होंने फर्स्ट प्रीमियम पे किया है वो 5,000 लाख है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 5,000 इंटू 25%. एंड जो 7,000 है, मतलब जिन्होंने सेकंड या उसके बाद वाला प्रीमियम पे किया है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 12.5%. गॉट इट गाइस? गॉट इट? तो चेक 5,000 into 25% and 7,000 into 12.5%. क्या सबको आ गया आंसर्स? Once all of you get the answers, then let me know in the chat window. तभी आगे बढ़ेंगे. कैलसी पे आंसर्स चेक करना दोस्तों. कैलसी पे आंसर्स चेक करना दोस्तों. एंड नेक्स्ट, सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसीज. आपको तो पता है सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसीज का क्या करना है. व्हाट यू हैव टू डू, 10% लेना एज वैल्यू, क्योंकि वो डीम होता है टुवर्ड्स इंश्योरेंस. तो चेक 85 आएगा. चेक 85 आएगा. ओके, नेक्स्ट, ओनली रिस्क कवर पॉलिसीज. ये जो ओनली रिस्क कवर पॉलिसीज है ना, दैट एग्जैक्टली इज टर्म पॉलिसीज. इसमें 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज वैल्यू. मतलब फुल 500 lakhs वैल्यू है. चेक, फुल 500 lakhs वैल्यू है. बिकॉज ये तो 32(4) डज नॉट अप्लाई. एंटायर प्रीमियम इज वैल्यू. एंटायर प्रीमियम इज वैल्यू. एंड गाइस, लास्ट वन, वेरिएबल इंश्योरेंस पॉलिसीज, जिसमें गवर्नमेंट ने, LIC ने बोला है कि 80% इज एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट्स. तो 8,000 में से 80% इज फॉर इन्वेस्टमेंट्स. उस पर GST नहीं आएगा. ओनली 20% इज फॉर रिस्क. तो 1,600 पे GST आएगा. चेक, 1,600 पे GST आएगा. आया कि नहीं? 1,600 पे GST. तो टोटल आएगी 4,310. गाइस, आई होप आपके नॉलेज में वैल्यू एडिशन हुआ है. आई नो कि आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज था, तो वो रिवाइज हुआ है. जो भी हुआ है आपके साथ, पक्का कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना. प्लीज कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स. इट मीन्स अ लॉट टू मी.
It means a lot to me, and I read personally every comment and I reply to the comment. So do you promise me you will comment immediately after the session? You have already liked the video, उसका तो कोई टेंशन नहीं है. You have subscribed to the channel. You have hit the bell icon. Important for me is your comment. Your comment will give me energy to give you more and more things in tables and charts. Yes. जैसे वीडियो खत्म होगा ना, आप कमेंट करना, उस वीडियो के नीचे कमेंट करना. आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट. So guys, thank you very much. I'll see you tomorrow. कल Saturday evening है. Still, we will take the class 9 to 10:30. We will take the class. Please do attend. कल वैल्यूएशन खत्म हो जाएगा प्लस टाइम ऑफ सप्लाई. ओके, वैल्यूएशन ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है, बट स्टिल बहुत आपको बताना है प्योर एजेंट की कॉन्सेप्ट एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स. व्हेन सेकंड हैंड गुड्स आर सोल्ड क्या होता है, तो उसमें एक हाफ एन आवर चला जाएगा. उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई करेंगे. फिक्स अटेंड टुमारो. कंप्लीट रिवीजन होगी वैल्यूएशन एंड टाइम ऑफ सप्लाई. एंड पक्का कमेंट करना भूलना मत. थैंक यू गाइस. गुड नाइट.